हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। अरे सुनाई दे रहे हैं आप लोग को? जी प्रभु जी। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम फोर्थ चैप्टर तक समरी देखे थे भगवत गीता का। तो आज मैं फिफ्थ चैप्टर को करना चाह रहा हूँ। ओके। तो आप लोग देखे थे क्या? कुछ वीडियोस देखे थे क्या? हमने चैप्टर 4 का समरी देखा था पिछले क्लास में। शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा। तो इट विल बी नाइस इफ यू फॉलो दिस वीडियोस ना। ओके, शायद आप लोगों को दिख रहा है ना अच्छे से। हरे कृष्णा जी श्रीधर। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी नाइस टू मीट यू। हरे कृष्णा। चलो, शुरू कर दिया तुमने। तुम भी उठ सकते हैं 7 बजे। हाँ, चलो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है मुझे। तुम्हें देख के। जी प्रभु। ओके चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट। चैप्टर 4 में, मतलब मैं रिवाइज ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास। आई विल जस्ट गो वेरी क्विकली। चैप्टर 3 में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं दैट कैसे क्या बोल सकते हैं, कैसे पॉसिबल होगा युद्ध करते हुए इंटेलिजेंस को प्राप्त करना, राइट? एंड वेरी सॉरी। ओके सॉरी, यस। तो यार, फाइन, राइट। तो चैप्टर 3 में भगवान ने ये प्रूव कर दिया था दैट यू हैव टू, चैप्टर 3 में कृष्णा प्रूव दैट, ओहो, सॉरी, परफॉर्म योर ड्यूटी।
ठीक है, परफॉर्म योर ड्यूटी. देन ही टेल्स पर pleasure of the Lord. Okay, for pleasure of the Lord. Okay. Then chapter 4, Krishna says, uh, Krishna talks about knowledge. Chapter 4 का नाम है knowledge. When you perform this yajna, मतलब when you perform this duty, what you will get? Knowledge. And uh, two types of yajnas, Krishna tells. Uh, two types of yajnas. One is, I think, एक तो हम बताते हैं द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, एंड दूसरा है, आई थिंक इट इज ज्ञान यज्ञ, और यू कैन से सेक्रीफाइस इन नॉलेज. मुझे याद नहीं है उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में. सेक्रीफाइस इन नॉलेज, एंड कृष्णा टेल्स दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस. जो हम नॉलेज के लिए करते हैं, नॉलेज में करते हैं, वो सबसे अच्छा है. देन कहा है, ठीक है. So now, द्रव्य यज्ञ, and Krishna tells in chapter 4 which on knowledge what knowledge you have to act upon, that that uh, we are parts and parcels of the Lord. समझ रहे? We are parts and parcels of the Lord. तो इसका मतलब क्या है? That when you do any duty, when you do any duty with this consciousness, when you do any duty with this consciousness, that is perfection of that work. That is perfection of that work. समझ आ रहा है आप लोगों को? So this is what Krishna told, especially in the third chapter. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मेरा पेन का साइज कम हो जाए. जूम आउट करना है मुझे. बेटा. ओके चिल्ड्रन, तो अभी हम चैप्टर 5 देख रहे हैं. ठीक है, चैप्टर 5. तो इसका नाम है, आप लोगों को स्क्रीन में दोनों स्क्रीन दिख रहे हैं? जी जी प्रभु जी. जी प्रभु जी. ओके, ठीक है. सो दिस इज
कर्म योगा, which is also the name of the third chapter, but इसका नाम है कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखते हैं हम ये क्या है। सो लेट अस सी श्लोका बाय श्लोका। मैं बस समरी जानना चाहता हूँ बहुत जल्दी, यही है। ठीक है, टेक्स्ट वन, अर्जुना सेड, ओ कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ मिनट, first of all you asked me to renounce the work, and then again you recommend work with devotion. Now will you call me? Definitely. Now यहाँ पे yeah, renouncing the work, and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? तो नाउ यहाँ पे ना आप लोगों को देखेंगे तो थर्ड चैप्टर में शुरुआत में भी एक क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। इन थर्ड चैप्टर में अर्जुन का क्वेश्चन ये है, व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग मी, व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग मी। नाउ फिफ्थ चैप्टर, Arjuna doesn't ask that question. Arjuna's confusion is gone. Okay, Arjuna's confusion is gone. That with work we can achieve devotion. You can say like that. Maybe we can work. We can achieve the state of. You can say the state of Stita Pragya. That is what is the conclusion of the second chapter. Okay, so Arjuna wants to, you can say, become like this, Stita Pragya. ठीक है, अर्जुना वांट्स टू बिकम लाइक दिस। सो उनका क्वेश्चन फिफ्थ चैप्टर में ये है, विच पाथ इज मोर बेनिफिशियल, विच पाथ इज मोर बेनिफिशियल। समझ रहे हैं? हाँ चिल्ड्रन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस इन द थर्ड चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर क्वेश्चंस? दिस इज द क्वेश्चन इन द फिफ्थ चैप्टर, विच पाथ इज more beneficial. Okay, so which path is more beneficial? That is what first question. Then let us see the second one. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotion service better than renunciation of work. So Krishna directly suggesting work in devotion. Work in devotion is uh, more beneficial than uh, renunciation of work. Okay. The fifth chapter is, children, my favorite chapter. You will see so many technical details actually about a person, because I like really the technical details of what happens inside us, how these nine gates are working, everything. So this chapter, it clearly talks about all these things. So I like this chapter very much. Okay, it has so many, होता है ना, कभी मूवीज में पंच लाइन्स होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है इस चैप्टर में ना कहीं पंच लाइन्स भगवान यूज करते हैं, which can remember, you can remember, right? One I can remember very easily is, um, a yogi does every activity only for the purpose of purification. This really inspired me. A yogi does every activity only for the purpose of purification. I think 11th or 12th shloka is this. Okay. Then now, one who has one who has neither hates or nor desires the roots of his activities is known as to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcome material bondage and is completely liberated. तो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं, वर्क इन डिवोशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आ, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट सपोर्टिंग
renunciation, और इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट सपोर्टिंग renouncing the work. No, Krishna is not doing that. He is telling that uh, if you um, neither hates nor desires, fruits of activities, neither hates nor desires fruits of activities, then you can say you are renouncing the work. Okay, so you don't need to physically renounce it. You just need to renounce the fruits of the work. That is fine enough. Okay, okay. So Krishna proved that how it is work in devotion is same as renunciation of work, and it is higher also. So let us see what Krishna has done. Only the ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of the material Sankhya. Those who are actually learned say that that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both, because both the paths have you can say um, where I can write mm, both gives same results. ठीक है, both paths will give same results. ठीक है, then one who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and knowledge on the same level, they see things as they are. Okay, so they see things as they are. So very nice. Krishna tells that they see things as they are. मतलब मैं बता रहा हूँ ना punchline. So this also I really like this shloka. So what is the meaning of this shloka? Both gives same results. Whoever sees the things sees both as same, then he see the things as they are. इसका मतलब ये है when you are able to do this, मतलब see children right now we cannot see both to get equal. समझ रहे हैं? Because why we cannot see that? Because क्या बोल सकते, we why we cannot see? Can you please tell children? Because क्या आप लोग सुन रहे हैं ना मेरा बातों जी को? प्रभु जी। हाँ, सबको समझ आ रहे हैं ना? हाँ, हाँ जी प्रभु जी। अम, ओके. Why प्रभु we जी, are not able to see them equally now? एनालिटिकल स्टडी Hmm. से मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हर एक पार्ट को कवर करना थ्रू मतलब नॉलेज। नहीं, analytical study means it is something like theoretical, and हाँ। work in devotional service is something like practical. You can understand like that. अच्छा ओके। Okay. I am not saying, I'm not asking what is the meaning. I'm just saying why we cannot see that now. बिकॉज Because we are दे आर नॉट इन नॉलेज। attached to the fruits. ओके। समझ रहे हैं? Because we are attached to the fruits of work. Till the time you have this, you cannot see like this. समझ आ रहे हैं? So children, if you want to really understand, see things as they are. See what a great shloka. मतलब आप लोग को समझ आ रहा है? What is the power of this shloka? Seeing the things as they are. Hmm. Seeing things as they are, right? Hmm. मतलब seeing things as they are means you can say like you are not in illusion.
You are uh, you are not in illusion. You are seeing the reality. Why we are not able to see reality? We are seeing reality. समझ आ रहे हैं? Why we are not able to see reality, children? because we are attached. Yes, because uh, why we are not seeing reality? Because our minds are completely filled with fruits of fruitive activity. मतलब fruits, desire or hatred, something is always there. ठीक है? So Krishna is asking us, go beyond them. समझ रहे हैं? Krishna is asking us, go beyond them. प्रभु जी, करंटली अगर मतलब हम अटैच हैं फ्रूटिव एक्टिविटी से, तो इन हम्म विच स्टेट वी आर इन, लाइक हम किस हम्म। बात को नहीं मान पाएंगे कि मतलब ये दो पॉइंट्स हैं। एक है वर्क एंड डिवोशनल वर्क, क्या मैं और एक समझ है, नहीं पाया, क्या बोला तुमने? हाँ हाँ, मैंने बोला कि एक प्रैक्टिकल एक हाँ, थ्योरेटिकल, राइट? एनालिटिकल तो नॉलेज। अभी हम, हम्म हाँ, एनालिटिकल हम्म नॉलेज है और एक प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस है। तो हम्म। अभी हम अभी हम जैसे मतलब हम अटैच क्या हैं चीज तो, मान नहीं पाएंगे? हाँ हाँ, वी वी कैनॉट थिंक दैट, we cannot understand how both will give the same result, अच्छा, ओके, how both paths are leading to the same goal. सेम वो समझ नहीं गोल। पाएंगे हम। ठीक है? ओके फाइन। सिक्स, merely renouncing all activities and not engaging in devotional service of the Lord cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. Okay, fine. मतलब next I'm going. One who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. So always working such a man is never entered. This is another punchline in this shloka. ठीक है, children? See the word Sarva Bhutatma Bhutatma. This is very nice point here. Sarva Bhutatma, Sarva Bhutatma, Sarva Bhutatma Bhutatma means uh, one who is dear to everyone, one who is dear to everyone, and everyone is dear to him. Children, I think in our entire life, in our entire life, we aspire for this. Our entire life. आप लोगों को कभी एस्पिरेशन आया that I want to become? First, second one is little difficult maybe to understand, but first one who is dear to everyone. मतलब I should be the हम्म, dearest person for राइट everyone, राइट। right? हम्म We all get this desire, right, children? So, हम्म, what is the solution Krishna is suggesting is three things he's telling. Who works in devotion? मतलब it is applicable to, मतलब if you read this second and third, fourth chapters, Krishna explained there how to work in devotion. And then second, who who is a pure soul. Pure soul, what is the meaning? Vishuddhatma. The purified soul. मतलब contaminations were gone. Then Jitendriyaha. Vishuddhatma means Jitendriya means controlling mind and senses. If you do this,
So always working, such a man is never entangled. So in this state, in this state, you will never be entangled. समझ आ रहे हैं? In this state, you will never be entangled. That's what Krishna is telling. So let us go ahead. Summary देख रहे हैं सिर्फ. Okay. Next. Now I think now if such a man is never entangled, then you can say a person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, divine consciousness. Uh, डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे? क्या संस्कृत वर्ड था उधर? नैव किंचित कृत करोमीति, नैव किंचित करोमीति युक्ता, प्रलपन. हाँ, युक्ता, engaged in divine consciousness. कहाँ पे लिखा हुआ है? First line, फर्स्ट, युक्ता, last word. एंगेज इन डिवाइन कॉन्शियसनेस. यस यस, युक्ता. So this word is here also there. योगा युक्तो. यस, समझ रहे हैं ना? सी चिल्ड्रन, हर श्लोका कनेक्टेड होती है. ठीक है. तो ऐसे लगता है प्रभुपाद इधर कुछ और बोल रहे हैं और प्रभुपाद इधर कुछ और बोल रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. योगा युक्तो, इट इज रिटन राइट. योगा युक्ता में एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग किया गया, बट इट इज सेम. वन हु इज इन ए पर्सन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस, युक्ता. ठीक है. So the same person we are talking about. That is the connection between both the slokas. So here, naiva kinchit karomiti. But person in divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating. ये सारे क्या है? Seeing, hearing, touching, smelling. What are these? You are Five knowledge connected to senses. material world. Five knowledge senses. Yeah, you are connected to material world through knowledge senses. This. So these are the Okay. five knowledge senses. Moving about, sleeping, and breathing. Moving about means it generally comes in कर्मा, कर्मेंद्रियास. ठीक है. एंड देन स्लीपिंग, स्लीपिंग एंड ब्रीथिंग, इट इज बियॉन्ड कर्मेंद्रियास एंड ज्ञानेंद्रियास. इट इज समथिंग रिलेटेड टू सटल बॉडी. अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसका फंक्शन है. ऑलवेज नोज विद इन हिमसेल्फ दैट ही एक्चुअली डज नथिंग एट ऑल. तो व्हेन यू रीच दैट स्टेट, दैट व्हेन यू रीच दैट स्टेट, क्या बोल सकते हैं, नॉन डूअर बोल सकते हैं आप अपने आप को. ठीक है. नॉन डूअर बोल सकते हैं. सो इन दिस नॉन डूअर स्टेट, what will happen? Even though you are engaged in all activities, even though he is engaged in all activities, but he knows that he is aloof from what? From sense objects. मतलब he is मतलब एक तरह से रेजर नहीं होता है क्या इधर? ये यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मैं. Senses are, he knows that senses are aloof from sense objects. तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना, सेंसेस आर aloof from sense objects का मतलब क्या है? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. नहीं प्रभु जी, एक बार एक्सप्लेन करना. सेंसेस आर aloof from sense objects means, मतलब जनरली हाउ यू विल गेस material happiness. Material happiness, how you will get when I see something, right? So this is called as
uh, um, it is sense, object of the eyes. Something will be there na outside world. हम्म ठीक है Then you राइट will get the word. Then you will दैट get इज the सेंस happy. ऑब्जेक्ट Right? हम्म Yeah, this is called sense object. Let us say ओके हम्म for nose, the हम्म smell is the sense object, हम्म and for mouth, the tongue, you can say like that. So many टेस्ट are the tongue. टेस्ट हाँ राइट 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 Uh, right, taste. So now, what is the meaning of this aloof? You know that aloof means, you can say, um, aloof means you can say that. See, um, right now, what I can say. Right now, we don't see. We see. mm, we see ourselves and sense objects together. समझ रहे हैं? We identify ourselves with these sense objects. What does it mean? Mm, uh, See, children, whenever uh, in any material activity, any activity, what is the meaning of any activity? We become one with the object. We become one with the object. What does it mean? We become one with the object means हम उसके साथ एक बन जाते हैं कोई भी एक्टिविटी में. समझ रहे हैं? हम्म तो when it is material activity, if it is material activity, then one with material objects. So what happens is we are creating an identity. We are creating an identity. And what is that? I am this material body, or you can say material elements. I am this material elements. ये क्या है? समझ आ रहा है चिल्ड्रन? हम्म हम्म I am this material elements. That is all we'll understand. तो मतलब ये बोलना आसान है, इसलिए हमें क्या बोल सकते हैं, ऐसे काम नहीं करना चाहिए ऐसे. बट इट इज नॉट इजी because we have very strong urges inside ourselves where we'll go again and again towards this thing. ठीक है? Oh, so fine. So let us move ahead. Okay. Hmm.
ओके, तो 8 to 9 हो गया। Then one who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. One who performs his duty without attachment. One who performs his duty without attachment, surrendering the result unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. ठीक है, तो same thing. It is almost. The yogis abandoning attachment act with body, mind, and intelligence, and even with senses, only for the purpose of purification. तो हमारा एम भी यही होना चाहिए. What should be our goal? Act with body, mind, intelligence, and even with senses, for the purpose of purification. only for the purpose of purification. See, children, now I don't know how many of you this inspires. This purpose of purification, this word, I don't know how many of you it can inspire, but it really inspires me. मतलब now, what is the, can you please tell, maybe I think I can stop here. मैं बाद में पढ़ूंगा और सब चीजें, क्योंकि आप लोग को जाना है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, लेट अस डिस्कस लिटिल बिट मोर अबाउट दिस पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन। ओके, या, सो व्हाट इज दिस पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन? मतलब प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्योरिफिकेशन इन योर लाइफ? हाँ, कैन यू प्लीज टेल? यू कैन स्टार्ट, एनीवन कैन स्टार्ट। बोलो भाई, किसी को याद नहीं पता हाँ, नहीं पता नहीं है क्या? हाँ, प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है आप लोग बोले? मटेरियल ऑब्जेक्ट से जितना मतलब अवे, ऐसा कुछ, दूर दूर, डेट, और प्योरिफिकेशन काइंड ऑफ जो आपके डिजायर्स हैं उनको छोड़ना, अटैचमेंट्स हैं उनको छोड़ना, मे बी। ओके, तो आई थिंक आई आस्क्ड दिस थिंग बट ओके, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मतलब प्योरिफिकेशन का मतलब ये है, बट व्हाट इज योर एस्पिरेशन फॉर दिस प्योरिफिकेशन? मतलब हाउ यू विल रिलेट इट विथ योर लाइफ? मतलब किस एस्पेक्ट में आप इसको रिलेट कर सकते हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? आई आई हैव ए पर्पस टू आस्क दिस क्वेश्चन। हाँ, मतलब हाउ कैन यू रिलेट इट? हाउ कैन इट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स? बस ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाउ कैन इट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? आर यू रियली एस्पायरिंग फॉर दिस? हाँ, कुछ आइडिया दे सकते हैं आप लोग कैसे आप लोग इसको एस्पायर कर रहे हैं? See, we all aspire for devotional service, but we just know don't know how to connect with it. मतलब we don't know that actually we are really aspiring for it. That's it. हाँ, ठीक हम्म। है। शिखर has told. I want others. प्रियांशु, आदित्य and गौरव। हाँ, प्रभु कुछ जी, बोल सकते हैं आप लोग? अगर फिजिकल चीजों से अगर दूरी बनेगी तो ऑटोमेटिक हम हमारी प्रॉब्लम भी शायद सॉल्व हो जाए। फिजिकल क्या बोले? फिजिकल? हाँ, फिजिकल चीजों से, जैसे जिससे फिजिकल खुशी मिलती है, कोई भी चीज हाँ, से या किसी भी तरीके से बॉन्डिंग से। मतलब आप क्यों, मतलब प्योरिटी क्यों चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, प्योरिटी क्यों चाहते हैं? मतलब कितने लोगों के अंदर ये इच्छा है मेरे अंदर प्योरिटी आए? प्योरिटी चाहने की वजह ये है प्रभु जी कि जो दुख है जीवन में, और जिस जो सोच करके हम दुख में आते हैं या तकलीफ होती है, और हम्म। इसको बाहर निकालने के लिए हम प्योरिटी चाहते हैं, और भगवान के नजदीक जा पाए, उनको समझ पाए, उनको जान पाए। देखिए, आप दिन में कितना समय ये सोचते हैं मुझे भगवान के नजदीक, भगवान के नजदीक तो छोड़ो, दुख दूर होना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं आप सच में दुख हाँ, दूर होना है मुझे? बहुत बहुत तो बहुत। प्योरिटी, ओके, तो प्योरिटी आने से कैसे दुख दूर होगा?
प्योरिटी आने से दुख दूर हो सकता है, ऐसे कि जो सोच करके हम दुखी हो रहे हो शायद वो दुख का कारण ही ना हो, वो बस सोच है मेरा कि। ओके, वो सोच दुख का कारण है, ठीक है, तो प्योरिटी से क्या फर्क पड़ेगा? प्योरिटी से ये फर्क पड़ेगा कि जो जिस चीज को पाने की मतलब ख्वाहिश है, या जिस तरीके के जीवन जीने की ख्वाहिश है, वो शायद सच हो ही ना, और वो सोच करके ही हम दुखी हो रहे हैं। अगर नहीं प्योरिटी वो आ तो ठीक जाएगा, है, बट वो सोच कैसे चेंज होगा चेंज होगा। अगर हम प्योरिटी ये आएंगे जान तो? जाएं, अगर हम प्योरिटी आ जाए, ये हम जान जाए कि वो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो बस एक सोच था मेरा कि ऐसे रहने मिथ्या पर। है। मिथ है, हाँ। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है, फाइन, नेक्स्ट प्रियांशु, यू वांट टू टेल समथिंग? हाँ प्रभु जी प्योरिटी का पर्पस ये है कि प्रभु जी कृष्णा से मतलब हाँ, कि लव डेवलप करना, ताकि जगह मुझसे ओके, डेवलप ताकि। तुम्हारे लाइफ में तुम प्योरिटी क्यों चाहते हैं? प्रभु जी भगवान से मतलब कृष्णा से मतलब कि वो लव डेवलप करने के लिए डिवोशनल सर्विस तभी हो पाएगी ना। मतलब क्यों आप लव डेवलप करना चाहते हैं? प्रभु जी क्योंकि जहाँ क्योंकि प्रभु जी हम पढ़ते हैं ना कि एटर्नल मतलब कि फ्रेंड वही है, मतलब कि जब हम पढ़ते हैं कि मतलब कि वो समझ गया, खुद बट ही। आपका डेली लाइफ में कहाँ पे जरूरत पड़ रहा है कृष्णा के साथ लव का? ऐसे कुछ जरूरत पड़ रहा है तुम्हें? हाँ प्रभु जी हर मतलब लाइफ में मतलब जैसे कि हर चीज में मतलब जैसे कि कभी एंगर आएगा, कभी मतलब अभी कि क्या जरूरत पड़ रहा है? अभी कृष्णा के लव की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हें अच्छे से खाना पीना तो मिल ही रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन प्रभु जी, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। यू आर कंफर्टेबल आल्सो। हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन प्रभु जी। क्या मिस कर रहे हैं आप? सेटिस्फेक्शन को मिस कर रहे हैं। आपको कैसे हम्म, पता है कृष्णा के लव से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? क्योंकि प्रभु जी मैंने वो थोड़ा मैंने फील किया है प्रभु जी। आपको कैसे पता है? मैंने फील किया है, मतलब जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, ओके, अच्छा, आप फील जब किया था, आप ये बोलना चाह रहे कनेक्टेड हैं, ओके रहते हैं ओके। तब। हम्म। ठीक है, आप इसलिए प्योरिटी चाहते हैं, ओके, वेरी नाइस, ठीक है, हाँ तापा, सॉरी आदित्य, ये तो स्कूल चला गया क्या? हरे कृष्णा, चलो ठीक है, आएगा तो बता देना। हाँ शिखर, वो क्या बता सकते हैं तुम? प्योरिटी, तुम्हारे अंदर इच्छा है प्योरिटी लाना है मेरे अंदर, और इसका क्या प्रभु जरूरत है जी लाने का? हाँ। लाइक मतलब प्योरिटी से तो मैं यही समझूंगा, मतलब हम्म जब जब मैं मंदिर आता हूँ, ठीक है, द एनर्जी आई हम्म फील हम्म इज, हम्म उस टाइम पे मुझे कोई मटेरियल डिजायर नहीं होता है, कोई हम्म। मतलब जो एनर्जी है ना वो मेरे को बहुत प्योर लगती है, एंड आई वांट टू बी इन दैट ओके, स्टेट। तो आई थिंक दैट बट क्या अगर आप हाँ, ऐसे हर पूरा दिन भर आप नहीं ऐसे रहने नहीं का नहीं नहीं, तैयार है? हाँ, नहीं ओके, हाँ मतलब मैं सोच नहीं पाता हर हर मोमेंट पे कि हाँ आई वांट टू नहीं बी नहीं, आप लाइक दिस, सोच नहीं बट पाते वो तो हाँ, ठीक है, बट जो हाँ रहने को तैयार। सीरियसनेस आप फील करते हैं, तो वो हाँ आप राइट, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है पूरे दिन भर? हाँ राइट, हाँ हाँ तो हाँ। क्या चीज रोकती है फिर आपको ये चीज करने से, मतलब सीरियसनेस को एक्सेप्ट करने से? कि क्योंकि बहुत बार हमारे मैं, पास समय रहता है, बट फिर भी हम टेम्पल नहीं जाते हैं। हाँ इफ राइट रियली राइट राइट, देयर फॉर सीरियसनेस इज देयर, हाँ देन हाउ वी विल नॉट गो टू टेम्पल? बिकॉज जो ये मैंने आपको बताया ना कि आप मैं कंप्लीट नहीं करने दिया जैसे आपको, तो मेरा वो था कि आए, मैं हर हर मोमेंट पे वो ये जो नॉलेज है इसमें नहीं रह पाता हूँ, मतलब वो तो ठीक है, बट आप हाँ। रहना चाहते हैं ना, मैं इच्छा के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, अ, हाँ, हाँ अगर इच्छा है ना, ये पूछ रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तो रह हाँ पा रहे कि नहीं रह पा रहे, हाँ, बट यू इच्छा वांट है, टू स्टे इन नॉलेज। हाँ, बट ये मैं पूछना चाह रहा समटाइम्स हूँ, हाँ 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 हाँ। इट इट इज कंट्रोल्ड बाय दैट ये सेंसेस, राइट, मटेरियल सेंसेस, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, समटाइम्स ऐसा हो जैसे, पाता है, आर यू रेडी टू मगर लीव दैट, मतलब लेट अस से सेंसेस आर एग्रीइंग, मतलब तुम्हारा और सेंसेस के बीच में कुछ हाँ हाँ डिस्कशन चल रहा है, एंड हाँ सेंसेस आर एग्रीइंग, चलो मैं तुम्हें अब से परेशान नहीं करूंगा, तो तुम तैयार है? जी बाबू जी, We need to genuinely ask this question to ourselves. Our senses are attached, or are we are attached to senses? वी आर अटैच्ड टू सेंसेस। हाँ, नहीं, आप तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, हमें अच्छा मतलब एक तो बोला जाता है कि हाँ कि माया करवाती है, माया करवाती है, बट वी आर ऑल्सो अटैच्ड टू दैट सेंसेस और मटेरियल वर्ल्ड। ओके हाँ ओके, वी आर तो अटैच्ड टू द सेंसेस, ओके, हाँ। हाँ तो वो मेन पार्ट वही है कि जो हमारा अटैचमेंट है मटेरियल वर्ल्ड और ये सेंस ऑब्जेक्ट से, वो इट इज द वो क्या बोलते हैं उसे बीच में एक नहीं, मुझे थियरी देने की जरूरत नहीं है ऑब्स्टिकल। इसमें। हाँ
क्या मतलब ऑब्स्टेकल है? यही ये मतलब जो हमारा अटैचमेंट है हम्म। मटेरियल सेंसेस और मटेरियल ऑब्जेक्ट से, मुझे वो लगता है, हम्म। मतलब अपने पर्सनल केस तो में। ठीक है, जो भी है, मैं ये पूछना चाह रहा हाँ हूँ, क्या तुम कहाँ पे स्ट्रक हुए हैं? यू आर नॉट एबल टू लीव द अटैचमेंट टू मटेरियल सेंसेस, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। Okay, okay, fine, fine. You are stuck there. Fine. So, because of that, you are not able to aspire for this sereneness or purity entire day. Okay, बहुत अच्छा है, very genuine answer. तो हम सब भी इसी हालत में हैं, children. So for me, whenever I remember this purity word, Krishna is so pure, and I don't have any मतलब much connection with Krishna, but we all Krishna is there inside in the form of super soul. So he's there. When I try to connect with him, then I think his purity, it जैसे ना, जैसे आप देखेंगे तो प्योर डिवोटी के प्रेजेंस में आप रहेंगे, सर के प्रेजेंस में या किसी और के प्रेजेंस में रहेंगे, तो एक तरह से वो जो ऑरा होती है उसके कारण ना हमारे मटेरियल थोड़ा शांत हो जाते हैं एक तरह से। अरे गौरव, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी। प्रभु एक जी मिनट, एक मिनट कृष्णा। रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो तो वो ऑरा के कारण ना हमें बहुत बार ऐसे होता है, मतलब वी कैन नॉट रियली, वी डोंट रियली फील दिस मटेरियल सेंसेस। तो लाइक प्रखर इज सेइंग, शिखर इज सेइंग, it is really difficult to control the urges of the senses, to uh, aspire for devotional service and leaving sense gratification. Many times it is like, it looks like इट्स ए ग्रेट ऑब्स्टिकल और बहुत बड़ा पहाड़ है जो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे कभी हमारे जिंदगी में, ऐसे लगता है। बट when we try to take shelter of this holy name, or when you try to take shelter of the क्या बोल सकते हैं, सुपर सोल, who is always present with us, right? His rays of, you can say, benediction, the rays which are coming from him, when you come in touch with him, these desires will be go away, and our minds, our senses, they will get slowly slowly purified. So जितना ज्यादा हो सकता है उतना टेम्पल जाना ठीक है, सब समझ गया, बट इसीलिए होली नेम दिया कलयुग में ना, हर समय आदमी टेम्पल में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए होली नेम, इट रियली पेनेट्रेट्स इनसाइड अस एंड इट टेक्स अस पर्सनली टू द लॉर्ड। So when you come in contact with the Lord, then definitely you will be satisfied, or you will be away, you'll be able to leave these material desires. So if you want to get the strength, Shikhar and everyone else, you need to chant nicely. If you are chanting, then definitely you will get that inspiration. Uh, right. ठीक है। तो हाँ गौरव, प्लीज टेल। प्रभु जी एक्चुअली आई वांट टू से इफ वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा एंड ही इज सो प्योर, देन हाउ व्हाई वी आर, मतलब हम लोग के अंदर ये प्योरिफिकेशन फिर नहीं, क्यों नहीं हमने है? कनेक्शन को छोड़ दिया। जैसे होता है ना, ये हाथ है, जब तक ये हाथ मेरा बॉडी से कनेक्टेड है, तब तक ये ठीक है। बट जैसे ये मेरा हाथ से कनेक्शन को छोड़ देती है, तब तो ये लाइफलेस हो जाएगी ना। इसको निकाल दिया, या जैसे होता है ना, कभी ये आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन नहीं होते ना हाथ, क्या बोलते हैं सुन्न उसको? सुन्न हो जाना, मतलब नम। तो, नहीं नहीं, डिसीज को बोल रहा हूँ मैं। पैरालाइज। पक्षवातम बोलते हैं इंग्लिश में, पैरालिसिस पैरालिसिस। हो गया, पैरालाइज हो गया, हाथ पैरालाइज हो गया, देन इट इज नॉट कनेक्टेड टू यू ना। समझ रहे? तो वी आर इन समथिंग दैट काइंड ऑफ स्टेट। ये हाथ हमारा कंट्रोल में, कनेक्शन को छोड़ दिया। जैसे हाथ इससे कनेक्ट हो जाएगा, then that purity, everything, pure soul is pure, but because of our conception, जैसे आप बता रहे थे, अलग अलग कंसेप्शन हमारे अंदर है, जिसके कारण हम वो कनेक्शन को फील नहीं कर पा रहे। तो वंस दिस मिसकंसेप्शंस आर गॉन, देन वी विल फील दैट कनेक्शन, एंड कनेक्शन फील करने की तरीका यही है, दैट यू हैव टू डू डिवोशनल सर्विस। ठीक है, जब आप डिवोशनल सर्विस चैंटिंग करेंगे, धीरे धीरे वो मिसकंसेप्शन चला जाएगा, एंड वो कनेक्शन आ जाएगा। वंस द कनेक्शन कम्स, देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, ऐसे बोल सकते हैं। समझ गए? जी जी। ये था। ठीक है, ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर प्रेजेंस। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कल के क्लास में, ठीक है? थैंक हरे थैंक यू कृष्णा। गुरु जी।